Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Beyond Borders, featuring The Crown and a host of other stuff. Assalamu alaikum. Amna. जी वालेकुम सलाम. The Crown season 5, but आपने क्योंकि अभी देखा है सारा, I Yeah. guess Yeah. you want to comment on all seasons. One through 5. Well, I don't remember 1 to 4. हम आपको याद कराएंगे हाँ, आमना जी. of course. 1 through 5, The Crown. और क्या आमना, आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं और मैंने देखनी शुरू की हैं काफी सारी. एक बड़ी exciting चीजें Netflix पे इस वक्त आई हुई हैं. हाँ. एक तो there's I'm watching Wednesday, which is a spin-off of The Addams Family. ठीक है. इसके अलावा मैंने देखना शुरू किया था Monica or My Darling, which I was enjoying. And that I will finish this week. All right. Then there was another film that popped up with Amitabh Bachchan and Neena Gupta. All right. Okay. And yeah. What was the name? I don't know. It's about this woman who dies. No, I think Dead Body or something. Oh, Dead Body. Dead Body नाम नहीं है इसका, but it's about this woman who. यार बच्चन साहब को क्रेडिट माशाल्लाह 80 साल की उम्र में going strong यार. What a going guy. strong. Well done बच्चन. Well done बच्चन साहब. बच्चन साहब मुझे पता है बड़े शौक से हमारा हॉट रिव्यू देखते हैं और so love you sir. Then of course there's a critically acclaimed series Swimmers. Oh right. जो के देखनी पूरा दिन आप Netflix देखती रहती हैं और काम नहीं आपको कोई? क्या करूं, पाकिस्तानी ड्रामा देखूं? Oh. Buzz. Mic drop. All right. जी. आप आज टपोरी हालत में क्यों हैं? टपोरी का है? जीन्स पहनी है और आपने वाइट टी शर्ट के ऊपर जैकेट मारी हुई है. नहीं टपोरी क्या है इसमें? टपोरी लुक है आपकी आज. अच्छा. हाँ. कोई बात नहीं. कभी-कभी टपोरी लुक भी होनी चाहिए. होनी चाहिए. आ रेला जा रेला अपन जा रेला अपन आ रेला है जा रेला है आती क्या खंडाला. अच्छा आमना मैं ये कह रहा था आपको कि मैं क्योंकि पिछले कई महीनों से द क्राउन में फंसा हुआ था. तो मैं तो क्राउन बड़े जोरों शोर से और बड़े इंटरेस्ट से मैंने देखा और मैंने उसको फॉलो किया. लेकिन ये है कि मुझे पता चला कि मैनिफेस्ट का सीजन आ गया, नई एपिसोड्स आ गई हैं. वाकई में अगर आ गई हैं तो बताइएगा कैसा. प्लीज स्पॉइलर ना दीजिएगा, वैसे बताइएगा हाउ इज इट गोइंग बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर इट. और इनोला होम्स 2 आ गई, पार्ट 2 सीक्वल. मैंने इनोला होम्स 1 भी नहीं एंजॉय की थी. नहीं की थी और मैं 2 भी नहीं देखना चाहूंगी. मुझे मुझे पसंद ही नहीं है. मैं क्योंकि शर्लॉकियन हूं जी बचपन से. शर्लॉकियन का कुछ क्या नहीं पसंद आपको? आपने मिल्ली जो है ना, ये मिल्ली नहीं हाँ ना, मुझे मिल्ली नहीं पसंद. इतनी अच्छी वो माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची है, क्या बिगाड़ा? मुझे नहीं पसंद. बिकॉज़ मसला है आपको. वजह बताए ना. I feel she's cocky as an actor. She's overconfident as an actor. I don't like her. Okay. I don't like her performance. No. मिल्ली तू Also Henry Cavill so didn't belong in a Sherlock Holmes. He's playing Sherlock. And he did not belong there as Sherlock. Exactly. So I did not enjoy one. And Henry का मैंने देखा है कि वो सही डिसीजन नहीं ले रहा है ना. हमें हमसे पूछना चाहिए. हेनरी तू सानू फोन कर. हेनरी का वाकई में प्रॉब्लम है. हेनरी जो है ना वो कर लेता है. हेनरी ठीक है, सुपर हीरो तक ठीक था. वही ना, मतलब अदरवाइज सुपरमैन के अलावा विचर में भी ठीक था, मगर उसके अलावा नहीं. गुड बाय उस सीरीज का नाम है. अच्छा. अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता. एंड वो सीरीज है? नहीं, आई थिंक फिल्म है. वो मैं जरूर. बच्चन साहब सीरीज नहीं करते. He's a film star. He's not a series TV star. Anyway, so हम ये कोशिश करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात हो सके. जिनसी टॉपिक. जिस अच्छा, मैंने कहा पहले जिनसी टॉपिक पे बात हो सके. टॉपिक पे तो मेरा नहीं ख्याल बात करना चाहेंगे हम. करना तो आप चाहेंगे वैसे, लेकिन चले. हाँ. ऑफ कैमरा. Yeah, okay. The Crown. जी. What do you remember of seasons 1, 2, 3 and 4? I remember everything. Yeah. Did you enjoy watching those seasons? आपने पिछले साल देखा, आप शुरू से देख रही हैं. कैसे देख रही हैं? कुछ बताएं अपना क्राउन की एक्सपीरियंस. मैंने तो उसी वक्त देखा था जब वो रिलीज हुआ था. आई थिंक 2016 में पहला सीजन आया था. And with Claire Foy as Queen Elizabeth II, and it was a stunning journey of how she's comes to the throne and all of that. बहुत captivating. Season 1, 2, 3, 4. Yeah. What do you think is the? So every character, every actor has taken 2 seasons, right? Yeah, but my question is, what do you think is the reason that such a huge audience globally has been able to connect with the Crown? Because the world globally connects with the British royalty. That's why. You think so? Of course.
I never used to connect with the royal family prior to I started watching Crown. Really? Yeah, मतलब I've been to England many times. I've lived there for a year जब मैं पढ़ रहा था. For those But of us मेरा who- royal family में even Buckingham Palace के बाहर जाके फोटोएं शोटिंग सारा कुछ खिंचाई. But I've never felt that need to know more about the royal family or to like एक होता है आपका interest बन जाता है कि यार कि अच्छा who are these people. Hassan, for those of us who were adults through the 90s, I think we were very connected with the entire British royalty, aristocracy. खास तौर पे Diana की जो lowest parts of her life, which the world was hooked onto through the 90s, whether it was her marriage with Charles, and it was Martin Bashir interview, and then of course her affair with Dr. Hasnat, and then her affair with Dodi, and then ultimately her death. So वो तो खैर एक आइकॉनिक पीरियड है हिस्ट्री का जो कि कोई भूल नहीं सकता and everybody we lived through it in the 90s. So yeah, I mean for Crown was like enigmatic because of that. ठीक है. In my assessment, अगर आप ओवरव्यू एक करें क्राउन के सारे प्लॉट्स का, it's essentially about these stories that are part of every household. The relationship dynamics, especially if we speak about the South Asian sort of families and the households, the dynamic, the relationship between mother and sons, for example, or a husband and wife, for example, and the dynamic between a mother-in-law and a daughter-in-law, for instance. Our dramas in any way are all about these relationships, right? It's seldom that our dramas get out of these circumstances or the household and go into some other realm or tell some other kind of stories. So in that context, I thought that it was quite amusing for me as a viewer who watches all these dramas every day in sort of like the same circumstances. But I was like, yeah, ये रॉयल फैमिली है, लेकिन मसले इसके वही हैं कि वो लड़का जो है माँ बाप उसकी शादी करा रहे हैं जबरदस्ती से अपनी मर्जी से, और वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पा रहा. मगर ह्यूमन रिलेशंस नहीं चेंज होते ना, ह्यूमन रिलेशन नहीं होते. बट द थिंग इज दैट ये जो उस दिन हम रिव्यूज में भी अपने बात कर रहे थे, यही ह्यूमन रिलेशंस जब हम अपने ड्रामों में देखते हैं मुक्ता जाते हैं, और यही ह्यूमन रिलेशन जब आप क्राउन के कॉन्टेक्स्ट में, रॉयल फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, आप नहीं उगता रहे. क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोस ह्यूमन रिलेशंस. दैट्स नॉट हाउ आई वॉच द क्राउन. मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन जो है it's a window to world history. Basically it's like 80 years of world history. दुनिया आपने बदलती हुई देखी, world wars आपने देखी through the little peephole of the royal family. अब खास तौर पे all these countries who have been colonized by the British, उनकी क्या एसोसिएशन है इन चीज़ों के साथ, इन हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स द कैरेक्टर्स. दो वेवलेंथ्स पे क्राउन खेलता है ना. एक तो वर्ल्ड ऊपर वाले जो आप वेवलेंथ की बात करी है वो फोकल पॉइंट तो नहीं है. बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल है. दो वर्ल्ड इवेंट्स आपके चल रहे हैं साथ साथ, बट किसी भी वर्ल्ड इवेंट पे उन्होंने पूरा मतलब एक दो एपिसोड. फोकल पॉइंट आपकी क्वीन एलिजाबेथ है और उसके रिलेशनशिप्स, बट फोकल पॉइंट तो एक ही होता है ना. फोकल पॉइंट तो क्वीन एलिजाबेथ है. अब बेशक वो क्वीन एलिजाबेथ की अपनी शादी हो या पहले अपने बाप के साथ रिलेशन हो, अपने बहन भाइयों के साथ हो, अपने औलाद के साथ हो, अपने सब्जेक्ट्स के साथ हो, अपनी गवर्नमेंट्स के साथ हो, अपने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हो, फोकल पॉइंट तो क्वीन एलिजाबेथ है. बट इट्स लाइक यू आर वाचिंग द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री प्ले थ्रू दोज आईज, एंड दैट्स वन लेवल. एंड देन द अदर लेवल is the personal lives of the royal family, which is where you see the dynamic being the same in every household, which it is. So it's the interplay is very beautiful. Plus the production value is so high that you're just taken in and you're like, okay, you're living it with them. All of that. I think a lot of credit goes to obviously Peter Morgan, of course, who's created the series, and which is why I was wondering, there are a lot of conversations that are shown to have happened between two people. Yeah. Right? So I was like, there's no way for somebody else to know if this is factual or if it... And they refused to give a disclaimer. No, now in this season 5 they did. They did? Fictionalized dramatization. Right. So I was like, but to go there where you have some facts, you have the basic research with you, and then to create or build a narrative around that. For example, season 5 mein, John Major ne, I've seen that he's come out and said that this is a lot of the stuff associated with him is a load of BS. Yeah. He said it's not true. Although I really love his character. Yeah, na? Played so well. So calm and so calm, and it's a lovely character. Right? So the thing is that when as a viewer, when I was watching The Crown, my thing was कि okay,
you know, for all its grandeur and for all the, you know, hoopla ke, oh, it's the royal family. But at the end of the day, उनके जो मसले हैं खानदानी आपसी, वो वैसे ही है यार, किसी भी जो मुझे नहीं लगे, पता नहीं क्यों नहीं लगे आपको? मुझे नहीं लगे, मुझे लगे यार इनके वही मसले हैं खानदानी। बिल्कुल भी नहीं वो मसले। क्यों नहीं है मसले उनके? यार ना उनको कोई पैसों का प्रॉब्लम है, ना कोई पावर का प्रॉब्लम है, ना डायनामिक का प्रॉब्लम है। क्यों नहीं है पैसों का प्रॉब्लम? मलका कह रही मेरी जी शिप हैगी रॉयल यार्ड, हसन लेवल देखें उसको है तो सही ना, नहीं हुआ वो तो हर ह्यूमन शी डजंट गेट हर वे। ओ भाई एक इंसान है, वो एक ही तरह से पैदा होता है और एक ही तरह से मरता है। मैं कह रहा हूँ ना, एक ही तरह सुन लेना, एक इंसान है, वो एक ही पैसेज ऑफ राइट्स और पैसेज में से पैदा होता है और एक ही जगह जाता है कब्र में मरने के लिए, एक उसकी जिंदगी होती है। ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज होंगी, but there is nothing like the normal common man. मैं सिर्फ आपको अपनी perception में, so when I watched it, this is what I find intriguing and interesting, and this is why I got hooked to it. Right. So because primarily, as you know, I started watching because Humayun was a part of it, and of course I had known about The Crown, and everybody always has given rave reviews about the series, so I was interested. When I started watching it, the reason I remained hooked was because of the relationship dynamic between all these characters, and of course, to a large part, credit goes to all the actors who've done such a fantastic job playing these characters कि आपको उनकी जो ह्यूमन साइड है, और मलका है ठीक है, मतलब आपने जब इंटरव्यूज में या वैसे हम जो भी क्वीन एलिजाबेथ को जैसे भी जानते थे, आपको नहीं लगता था कि यार कि वो एक आम इंसान होंगी, अंदर से एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है ना एक पब्लिक इमेज की. But to see her as vulnerable as, you know, any other woman, to see her struggle with her marriage. Except for she's not. Why do you keep saying that? Because she's not. But she is. No, she's not. She had the same problem of no, she didn't. Like any other female character. The husband being a philanderer and having affairs left, right, center. That is human nature. It's not going to change. Exactly. But she didn't have, those were not her problems. That's it. Of course that was her problem. That was not her problem at She all. felt insecure. In those moments, the first time she sees that photograph of a ballet dancer. She is a human being. She will have emotion which is not allowed to show. Exactly. That's what I'm saying. So, Crown की victory इस चीज में है कि वो जो human emotion है, जो कि चाहे मलका का हो या चाहे किसी commoner का हो, वो उन्होंने depict किया. वो मुझे पसंद आया. मगर ये season जो था ना, मेरे लिए season 5 was the most disappointing. पहले आप ये बताएं कि 1 through 4. What were your favorite performances? My favorite performances? Yeah, I mean, Queen Elizabeth has to be Queen Elizabeth's performances, whether it was Claire Foy, or whether it was Olivia Colman, or whether it was Imelda Staunton, all three of them. But I think Claire Foy was my favorite. Claire Foy was the best, Claire Foy down. was my I think But Imelda Staunton was very good. Because it was also a very exciting time for Queen Elizabeth. मैं तो सिर्फ प्योरली इस सेंस में कह रहा हूँ कि किसने पोर्ट्रे बेहतर किया. पोर्ट्रे हाँ, बट पोर्ट्रेयल का कैरेक्टराइजेशन का टाइम बहुत इंटरेस्टिंग था ना, तो यू आर मोर इन्वेस्टेड इन दैट कैरेक्टर एट दैट टाइम. आई वाज मोर आल्सो अ लॉट इंटरेस्टेड इन अभी जो सीजन 4 वाला है, इमेल्डा स्टॉन्टन ने जो प्ले किया. दैट्स 5. That's 4 and 5 ना? हाँ. No, just 5. No, 5 सिर्फ, yeah. ओलिविया कोलमन वाला मुझे नहीं इतना उनका किरदार पता नहीं क्या वजह थी, वो नहीं मुझे हुआ. नहीं हाँ. दूसरा आपको याद होगा हम बात कर रहे थे फातिमा जिन्ना की सीरीज के ऊपर, एंड वी स्पोक अबाउट द कास्टिंग. हियर यू सी ओलिविया कोलमन, उनकी आंखों का रंग फर्क है बिल्कुल. शी इज गॉट ब्लैक आईज. हाँ. राइट. हाँ. शी डजंट हैव कलर्ड आईज. ओके. So while अभी इमेल्डा स्टॉन्टन की आंखों का obviously visibly उनकी colored eyes हैं, और मेरे ख्याल में शुरू में जो क्लेयर फॉय की भी ब्लू आईज हैं, बट उनकी नहीं है. And I read somewhere कि they wanted Olivia Colman as the actor, and at one point they thought कि यार कि चलो हम contacts बना देते हैं, but then they said कि वो जो एक्सप्रेशन है जो वो कैप्चर नहीं होगा सही से. Then they refused and they said, let's go. अच्छा, interesting trivia, right? In our dramas, what do they do? They like ना भी जरूरत हो तो contacts लगा दो. हाँ. तो बट ये कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं कि यार कि वो तो लुक मैच नहीं कर रही, कंसिस्टेंसी नहीं. उन्होंने कहा अखा ही चेंज कर दो 2 सीजन आस्ते. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. But as far as standout performances are concerned, I want to mention Josh O'Connor, who played the younger Charles. Very good. He was very good. Excellent. Performance. Yeah. Especially when he goes to Eton and his entire breakdown, and it was very, very What good. a fantastic performance. Yeah, agreed. What a fantastic performance. And I see that he actually won the Golden Globe Award for Best Actor.
Amazing. हाँ. I think so did Olivia Colman. हाँ, Olivia Colman also won, and he also won Emmy. An Emmy and a Golden Globe. Amazing. So Josh O'Connor की बहुत अच्छी, मुझे उनका किरदार, उनका चार्ज जो उन्होंने प्ले किया, वो मैं उस किरदार से बहुत हद तक, मतलब मैंने एंजॉय किया उस परफॉर्मेंस को, कनेक्ट किया बहुत अच्छे लेवल पे. और कोई परफॉर्मेंस जिसका आप जिक्र करना चाहें? नहीं, परफॉर्मेंस सारी अच्छी थी. किस-किस का करते हैं? Emma Corrin का. Younger Princess Margaret was one of my favorites. Yeah. She was played by Vanessa Kirby. Beautiful. Very hot woman. Hot woman. Extremely hot woman. Hot and a hot performance. Yeah, she was outstanding. I love the actor who's played the Prime Minister in season 5, John Major. Yeah. Emma Corrin played the younger Diana. Again, fantastic performance. I thought that she was a lot better than Elizabeth. Debicki, really? Debicki, yeah. You didn't think so? No, I thought Elizabeth Debicki really nailed Diana's entire body language and expression. Magar, मुझे ऐसा लगा कि it went into caricature mode. बहुत ज़्यादा हो गया था. The tilt of the head and the entire, the big wet eyes, it was a bit too much. In 10 episodes, मेरी बस हो गई थी बस. मैंने कहा बस भाई. वो जो आपने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, बिल्ली के लिए, क्या? कॉकी परफॉर्मेंस. तो मुझे एलिजाबेथ की थोड़ी सी कॉकी लगी वो परफॉर्मेंस. She was like acting too much. Emma on the other hand was quite like fluid with her performance. Yeah. It was more enjoyable. But considering this was okay, so this was 10 episodes depicting, I think, the time between 1992 and 1996. Because spoiler alert, जिन्होंने नहीं देखा, they don't take us to Diana's death. It ends before the death. Season 5. I thought it's going to come in season 6. अभी तो डोडी के साथ सीन शुरू हुआ. Exactly. पहले तो season 6 होना ही नहीं था ना, अब renew हो गया है season 6. Season 6 हो रहा है. तो season it's going to be the last season, I think. Yeah, season 5 में आपको डेथ नहीं नजर आएगी. season 6 के आगे कहाँ लेके जाएंगे? फ्यूचर तो नहीं अब डिपिक्ट कर सकते ना. नहीं डायना की अगर सीजन 6 को कितना लेके जाएंगे वो डिपेंड करता है. ठीक है. तो मुझे ये था कि सीजन 5 के 10 एपिसोड्स में आपने ये 4 साल डिपिक्ट किए हैं. उसमें ऑफ कोर्स देयर वर सम मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हैपेंड, जिसमें से एक वो मार्टिन बशीर का. दिस वाज मोर अबाउट डायना एंड चार्ल्स देन इट वाज अबाउट प्रिंसेस क्वीन एलिजाबेथ, राइट? और उसमें इनकी जो रिलेशनशिप था, इनके जो हाई पॉइंट्स थे या जो न्यूज़ वर्दी पॉइंट्स थे, वर ऑफ कोर्स द टैम्पॉन गेट स्कैंडल जो कैमिला और चार्ल्स का होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. मार्टिन बशीर का इंटरव्यू पूरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, किस तरीके से वो निकालता है, किस तरीके से वो देती है. The entire divorce was very interesting. कि किस तरह मोनार्की में तो अलाउड ही नहीं है ना, द कैथोलिक चर्च तो अलाउड नहीं करता डिवोर्स, तो किस तरह वो चेंजेस और क्वीन एक्चुअली खुद लिख के कहती है. क्वीन लिख के कहती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था सारा. However, I felt that entire episode dedicated to Dodi's background was like completely useless. I actually found it very enjoying. But why? Enjoyable, not enjoying. It had nothing to do with the royal family. I thought it was so much fun. I would have rather known a little more about Dr. Hasnath. Yes. That's one thing. I mean, Hasnath was the love of her life. उसको उन्होंने हल्के 6 सीन दिए हसनात को, और डोडी की पूरी बैकग्राउंड, इजिप्ट में कहाँ वो पैदा हुआ, किस तरह उसका बाप अमीर हुआ, ऑल ऑफ दैट, वो यूजलेस बिल्कुल. सेकेंडली अपना बोरिस येल्टसिन एंड द रोमानोव एंटायर कंट्रोवर्सी, वन होल एपिसोड. क्यों भाई? Why? It's something peripheral that happened, of course it's important, but it's not central to either Queen Elizabeth's life and tenure, nor is it central to Diana and Charles. These 2 episodes were for me a waste completely. And then the whining and the constantly Princess Diana ki, because this was the lowest time in the history of the royal family. It was very depressing to watch. And there wasn't enough time to give us relief from it. Like डॉक्टर हसनात और डायना का रोमांस तो बड़ा हॉट था, हमें तो नहीं, जो हॉटनेस तो नहीं नजर आई. उस पे हम एक सेकंड में आते हैं जी. बट गोइंग बैक टू योर पॉइंट डोडी का और वो सारा, आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट आल्सो बिकॉज जो कहानी थी मोहम्मद अल फायद की, मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक द एक्टर्स नेम इज खालिद सलीम डॉ,
जिन्होंने वो किरदार प्ले किया and it's done such a stellar ये job. तो आपके अंदर दिल का निकला ना कि लाला तू अमीर कैसे हुआ इतना, हाँ ये इतना अमीर कैसे, maybe of course वो अंडरडॉग की कहानी होती है, किसको नहीं पसंद, और आपको वो परिजात वाली कहानी किसको नहीं पसंद कि एक बंदा जो कोका कोला बेच रहा है और वो एकदम इतना बिलियनर हो गया कि उसने हैरिट्स खरीद लिए जाके. हाँ, लेकिन इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आप क्राउन की बात कर रहे हैं, उसमें एक कैरेक्टर के बैकग्राउंड में जाके एक पूरा एपिसोड दिखा देना. हाँ, बट मुझे उसकी जो ताल्लुक था वो इस तरह से समझ में आया कि ये वो किरदार है जो कि रॉयल फैमिली के लिए जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो तब्दील करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, इन द सेंस के इवेंचुअली डायना की जब मौत होती है तो दिस इज द कैरेक्टर दैट इज विद हर इन दैट कार, एंड ऑफ कोर्स देयर हैव बीन reports that they were engaged and there people have also said that she was pregnant. So wo ek, since the character is so integral to the the narrative around the royal family, इसलिए शायद वो बैक स्टोरी दिखाना जरूरी था. ये भी हो सकता है कि बिकॉज वो बैक स्टोरी है इतनी इंटरेस्टिंग, जैसे इन माय केस आई रियली एंजॉयड वाचिंग ऑल ऑफ दोस scenes and that backstory. Enjoyable था लेकिन unnecessary था. वो जो रोमानोव्स वो जो आपने बात की है वो था. But coming to now Dr. Hasnath जी, played by Humayun Saeed जी, what did you think of Humayun's performance, his casting and his performance? I thought it was very good. It was very apt. It was very spot on. I think Humayun gained the right amount of weight to portray Dr. Hasnath, and उनका पूरा जो एक articulation थी, execution of dialogue, the expression, it was all very, very on point. I thought it was a very good performance. Very good performance. Of course, no fault of his. There wasn't enough of it. For me, my biggest disappointment was it just wasn't enough of it. So, when Dr. Hasnath is introduced, this is essentially the first time that we see Diana's romance, a pure sort of like, romance and love blossoming. राइट क्योंकि जो आपने ज्यादातर डयाना का जो प्यार मोहब्बत का जो रिलेशनशिप देखा वो चार्ल्स के साथ ही देखा, एंड हाउ ट्रबलसम इट वाज. आपने उसको उस तरह से एंजॉय नहीं किया, या वो जो रिलीफ रिस्पाइट की हम अक्सर अपने ड्रामों को लेके बात करते हैं वो नहीं मिलती. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि डयाना के किरदार को लेके आपको एक रिस्पाइट रिलीफ मिलती है और आप एंजॉय करते हैं. एंड ऑफ कोर्स हुमायूं की अदाकारी जिन लोगों ने देखा है, जैसे आमना कह रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर अदाकारी हुमायूं कर सकते थे. जितना शानदार काम उन्होंने किया और जितनी अच्छी केमिस्ट्री उनकी बिल्ड हुई है. उनका एक एक्सप्रेशन है वो व्हेन डॉक्टर हसनाथ इज sees the interview on the television and he gives like a jittery sa expression. I was like, I've never seen Humayun gives this sort of an expression before. So the thing is कि एक इंटरनेशनल सीरीज में जाके इस तरह से परफॉर्म करना, जहाँ पे इतना मतलब सारी दुनिया की तरफ से अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, वो हुमायूं का उनका क्रेडिट है. बट एज यू सेड, मुझे जो उनके किरदार का इख्तिताम था, क्लोजर, वो तो मिला ही नहीं. उसको पीक ही नहीं किया. जब रोमांस ही नहीं पीक हुआ. इतना जब ब्लॉसम कर रहा है रोमांस और आप ऑडियंस को दिखा रहे हैं वो रोमांस, तो आपने एकदम सडनली उसको कर दिया. उन दिनों में 2 दफा शी केम टू पाकिस्तान फॉर डॉक्टर हसनाथ. She told him that I'll convert to Islam. None of that. अच्छा, हुमायूं ने अपने इंटरव्यू में, आई थिंक वासे के शो पे जब वो गए हैं मुज़ाकरात में, तो उन्होंने ये बोला कि उनका एक सीन कटा है एपिसोड 9 में. उस इंटरव्यू में उन्होंने बात की और वो सीन वो था जिसमें she actually has that conversation with Dr. Hasnath and says कि I want to convert to Islam. तो ये सीन कटा है, तो इतना जरूरी सीन क्यों काटा है द क्राउन ने, मतलब नहीं काटना चाहिए. So the thing is, I've read a lot about Jemima Goldsmith Khan's association with the Crown, and she was actually brought in as one of the writers to write these days in Diana's life because they were very close. They were very close, और उनके साथ ही Diana पाकिस्तान आई थी. So she says in her interviews, and it's in the media, that she withdrew her role, her input in the Crown because she didn't agree with the way it was being written. Those days in Diana's life, Jemima did not agree with the way Diana was being portrayed. So she withdrew her support and her contribution. तो उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया था. तो ये ऑब्वियसली कोई तो गलत रिप्रेजेंटेशन हुई है ना, जो रिट्रैक्शन हुई है. नहीं, उस वजह से फर्क इफेक्ट क्या हुआ है हुमायूं की परफॉर्मेंस और उनका से? उसके इफेक्ट ये हुआ है कि इतना एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप था डायना की लाइफ में, वो एलिमिनेट हो गया. अब जैसे आप ही कह रही है, डोडी के ऊपर पूरी एक किस्त अगर उन्हें दी है, तो इसमें डायना एक्चुअली अपने मुंह से कह रही है दिस इज समवन, विलियम को बता रही है कि this is someone potentially who can be more than a friend. And I found love. I mean, she called him Mr. Wonderful in her life. She called him her true love.
वो उसके घर में शिफ्ट हो गई थी. She used to iron his shirts in the morning. You don't see any of that proximity. The connection आपने उतना blossom नहीं करने दिया. हालांकि उसका ग्राउंड वर्क सारा हो गया था. हुमायूं की केमिस्ट्री विद एलिजाबेथ, like the chemistry between Dr. Khan and Diana, it's there. I mean when she says that, have you seen his eyes? He's got such incredibly kind eyes. You're building that chemistry, but then what do you do with it? No, in the next scene when he when he touches and he says, "May I?" Although I still think कि left पे heart होता है, वैसे ये अजीब सी चीज सी है. डॉक्टर तो ज्यादा पता है. डॉक्टर तो नहीं ना, फिर मैंने पूछना पड़ेगा डॉक्टर को. कार्डियोलॉजिस्ट. ये आप हुमायूं को इंटरव्यू में पूछेंगे ये दिल कहाँ, जब आपने हाथ रखा एलिजाबेथ के तो दिल धड़क रहा था कि नहीं. दिल तो फिर मैंने हमेशा ये सुना कि लेफ्ट साइड पे होता है दिल. मेरे ख्याल में सेंटर में होता है. मेरे ख्याल में टिल्ट करता है लेफ्ट पे. अच्छा चलो जिधर भी है वो एक और कॉन्वर्सेशन है, बट द फैक्ट इज कि वो केमिस्ट्री पैल्पेबल बन रही थी, नजर आ रही थी. And I was like, अच्छा. फिर एकदम एक सीन उन्होंने दिखाया शॉट where he's looking at the interview, watching the interview and तक खत्म. उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन में अपनी कहती है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, दिल से याद आई. टीना ब्राउन has written Diana's biography. उसमें when she writes about the accident, of course nobody was there and whoever was there died. No, one bodyguard survived. But she's writing about that moment where there's जो collision होती है और तो डॉक्टर्स से ही पूछा होगा बाद में कि क्या था, तो her heart actually had moved from one side to the other. In that जो impact होता है गाड़ी का. बस यही था. मैं बड़ी सैड हो जाती हूँ सोच के यार. बहुत मुझे सैडनेस होती है. It's just sad to see a woman being so miserable in her life and then dying this way. But what you said about Jemima retracting, this could be this could be a real thing. Withdrawing support to she was contributing to the writing of those episodes and then she withdrew. अब सीन ये है कि मैं जब ये देख रहा था सीरीज, उससे पहले डायना का मेरे दिमाग में जो इमेज था वो और था completely. अच्छा. जब मैंने देखा मैंने कहा I never क्या था पहले आपका इमेज? I never knew that she could be so whiny as you said. जो season 5 है. I don't think she was this whiny. I think Elizabeth Debicki has made her a bit too whiny. That's what I'm saying. So especially that scene. It's the Urva effect on Elizabeth Debicki. Urva syndrome. Especially that scene where Charles actually goes to her house after divorce is finalized, and in that moment I was like, ठीक है, whatever your relation may have been, it has ended now. It has ended. वो आया है उस केस में, जब वो एफर्ट करके आया है तो चलो ठीक है, 15-20 मिनट के लिए तो बंदा आराम से बना देती है ना स्क्रैम्बल्ड एग्स उसको, क्या मसला है. हाँ तो वही बात है ना, 15-20 मिनट आराम से बात कर सकती थी. बट वो नहीं की. तो आई वाज लाइक, एंड आल्सो Diana keeps saying that the royal family wants me to come across as not normal or unhinged. But she does in certain instances act like that, you know. So as a viewer, I was like, no, of course she doesn't. When? No, is it emotional trauma or what? I don't know. But as a viewer, I was like, okay, you know. She had issues. Of course, she had body dysmorphia issues. She had weight issues. She had bulimia. She had all of those issues which were induced by Charles' lack of attention. हाँ, वो सब तो है. मैं वैसे बात कर रहा था in certain, you know, certain reactions to conversations, certain way that she behaved. She did seem erratic in those instances. I don't know how true that is, but एक जो था ना मेरा डायना के बारे में एक इमेज होता ना, आप किसी के बारे में मुख्तलिफ था थोड़ा. I thought she would have been a lot more like, you know, composed and matured. नहीं, मुझे कभी, because I've read her biography, तो मैंने इतना नहीं मैंने कभी भी composition या compose वाला situation तो था ही नहीं. इतना मैंने research नहीं किया. She was always an emotional wreck. तो ये था. But anyway, main जो obviously अफसोस as a पाकिस्तानी viewer वो ये है कि यार कि हुमायूं का किरदार का एक closure होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया. Especially जब इतनी अच्छी एक chemistry का build-up एक शुरू हो गया था. Coming to the kisses. What do you want to say about the kisses? Well, I mean, a lot of people said that were they necessary? Were they not? I mean, they don't show anything actually. She says, do I not get a kiss? And I think that's a very important conversation where he turns around and says, I don't understand what you see in me. I'm slightly overweight, chubby, and not very attractive. Workaholic. Why would you be so interested in me? You know,
एंड उसके जवाब में व्हाट शी सेज, आई थिंक उनके जो कनेक्शन का जो बिल्डअप था रोमांस का, उसमें बड़ा वो इंटीग्रल पार्ट और सीन था, उसमें अगर किस ना होता तो मैं कहता कि बहुत ही फीका ये वो हो गया रोमांस था। हाँ, आई थिंक वो तो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न्ड, I think that was important. Agreed. The other was when she's dropping her off. She's dropping him off, and he's going home. वो भी normal, it's like a goodbye kiss. Natural सा था फिर, सही है. But there wasn't enough romance. There wasn't enough closure. No, not at all. And it's quite atypical of the Crown, because if you see, usually जो किरदार आते हैं उनका एक even मार्टिन बशीर का, यार आपने इतना, मार्टिन बशीर तो खैर था भी, it was an important part. ठीक है, but डॉक्टर हसनात was less important than मार्टिन बशीर, यार मतलब. और मैंने देखा कि मार्टिन, the actor who's playing मार्टिन बशीर, उनको ओपनिंग क्रेडिट्स में उनका नाम आया, हुमायूं का एंड क्रेडिट्स में आया. So क्या है क्राउन वालों, क्यों कर रहे हो ऐसे तुम लोग हैं? क्राउन, द क्राउन, व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू बीइंग अनफेयर टू आवर एक्टर्स? I wouldn't put it that way. Yeah, but I wouldn't put it that way. But no, so why was Humayun's name not in the opening credits? I don't know about the opening. It wasn't a big enough role. Why was it not? That's the thing, na? Why wasn't it big why enough was it role? not? Yeah. Because he performed it really well. Everything was there. अब होगा ना season 6 में आपको डोडी नजर आएगा पूरा. डोडी नजर आएगा season 6 में. Let's see. तो ये था फाइनल. आप क्या कहना चाहेंगी क्राउन? No, I think season 5 was the weakest season out of all 5. But nevertheless, it's a huge series. It is meant to be watched and enjoyed. And even in its lowest points, it is still watchable, extremely entertaining, and extremely, extremely finely executed. Yeah. So even if it's lowest. And what would you say about the fact that a Pakistani actor like Humayun Saeed was part of the series? No, it just shows their commitment to getting the right actors to play the right roles. And I mean, I'm very pleased, of course, that they have a Pakistani actor playing Dr. Hasnath. ठीक है. Yeah. And I think it Pakistan की representation के हवाले से भी it's important, because Diana does mention Pakistan a couple of times. उर्दू के बारे में, there's reference. Indeed. पंजाबी किसी से, do you speak Urdu or Punjabi? He says English. I was born here. Martin Bashir के साथ. So I think as far as representation is concerned, the Crown is pretty apt and they do a very good job. They do. And the fact that they cast Humayun's done a good job. So it will open doors for more actors, hopefully, and we'll get to see more actors, Pakistani actors, in international projects. आप लोग Crown के बारे में क्या सोचते हैं? बिलखसूस सीजन 5 के बारे में क्या सोचते हैं? हुमायूं की परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा. आमना जी, what else would you like to talk about? No, I would rather talk about other things in another episode of Beyond Borders. अच्छा? हाँ, because मैंने अभी खत्म नहीं किया. Wednesday भी नहीं मैंने खत्म किया. I'm on episode 4. ठीक है. और मुझे देखना है. I want to see Goodbye as well, because the trailer seemed really interesting. Amitabh Bachchan and Neena Gupta. I have to finish Monica, My Darling, which I would like to. I would like to watch Swimmers, but it seems to be very depressing, so मैं शायद ना देखूं. ठीक है. Because holiday season है, अब मैं holiday Christmas films देखूंगी सारी. मोड में चली गई. मैं Christmas मोड में चली गई हूँ और पुरानी फिल्में देखूंगी मैं, ना कि नई वाली. तो मैं उसमें चली गई हूँ. तो काफी कुछ है देखने के लिए. मैं देखूंगी, फिर मैं रिपोर्ट करूंगी. ठीक है. मैं भी तब तक किनोला होम्स पार्ट 2 देख लूंगा. आप देख लीजिएगा. मैंने देखना शुरू कर दी है, फिर मैं कैच वाकई नहीं कर पाया. ठीक है. कंप्लीट नहीं कर पाया. और फिर हो सकता है कि मैनिफेस्ट का जो नया सीजन एपिसोड्स आ गए वो भी मैं तब तक देख लूं. जी. तो थोड़ी सी मैं भी अपनी इनपुट जरूर दे दूंगा बियॉन्ड बॉर्डर्स में. जी जरूर. ऐसी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्में हैं, स्पेशली थ्रिलर फिल्में जो मैं आपसे हमेशा रिकमेंडेशन मांगता हूँ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थ्रिलर्स, मिस्ट्री थ्रिलर्स जो कि नेटफ्लिक्स पे आजकल हैं, जिसको आप चाहेंगे कि मैं और आमना देख के हम रिव्यू करें, हम उसके बारे में डिस्कस करें, तो ज़रूर हमें बताइएगा अपने कमेंट्स के साथ. और मिस्ट्री थ्रिल्स के अलावा भी आजकल आप लोग क्या नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उसको डिस्कस करें बियॉन्ड बॉर्डर्स में, वो भी मुझे और आमना को जरूर बताइएगा. दिस डज नॉट हैव टू बी नेटफ्लिक्स स्पेसिफिक. इवन अमेजोन के ऊपर अगर कुछ देख रहे हैं, हमारे पास तो अमेजोन, नेटफ्लिक्स की है अवेलेबिलिटी और यूट्यूब की. इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर कुछ आपको मिल रहा है इंटरनेशनल जो आप इंजॉय करें, हमें ज़रूर बताइएगा. मुझे और आमना को आप इजाज़त दीजिए. कल मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद अनदर एपिसोड ऑफ हॉट बाइट्स. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.